Why are Maharashtra's farmers so vulnerable, particularly vulnerable Vidharbha farmers, Marathwada farmers, so vulnerable to the vagaries of the market and to the central government policies and the Maharashtra government policies? Senior farmer leader and activist Vijay Jawandhia speaks to us on the issues confronting Maharashtra farmers today as we go to polls on November 20th. The questions he asks are very, very sharp. Does the Indian farmer have to depend on America to decide our pricing? Is the United States going to decide the pricing of soya beans and cotton for Maharashtra, Vidharbha, North Maharashtra farmers? Why are our entire policies so skewed against the farmer? Why is agriculture, despite being a state subject under Diary Entry 14 of Schedule 7 of the Constitution, so dominated by central government, union government policy? And he also tells us how the Modi government 1, 2 and 3, 10.5 years, have been a series of promises and flip-flops on those promises, betrayal of those promises. Sharp questions and answers raised by Vijay Jawandhia. Do listen in. He tells us, for instance, a very interesting anecdote about Manmohan Singh as Prime Minister. Manmohan Singh as Prime Minister, a man who was primarily an economist and who was still a Democrat in the sense that he opened to interventions, intrepid interventions from the ground by experts such as P. Sainath and others. And therefore, when it was pointed out to him that the policies embarked on under him post-1991 had created a sharp rural-urban divide, he was prepared to listen and take some urgent measures. Vijay Jawandhia ji tells us how 3 major steps that he took, first in 2004, then in 2008-9, on the eve of the UPA 1 and 2 governments, actually injected a huge credit flow into the rural economy. One, he ensured 40,000 crores disbursement to Manrega. Manrega is a rural work program that was much villainized and demonized by Modi when he first came in as Prime Minister, and now he is helplessly adopted. Then loan waivers to the tune of 70,000 crores were written off by the Manmohan Singh government prior to the 2009 second UPA government. And thirdly, he also ensured that MSP was in one stroke, in 1 year he raised MSP as per the MS Swaminathan recommendation from a 28% to 50% for all crops. Now, this is something even Manmohan Singh could not continue in UPA too. And it's worth wondering why. Because as Mahayuti in Maharashtra faces Maha Vikas Aghadi, the same formations are in Maha Vikas Aghadi who were there in UPA too. And we need to ask them, are they going to give us assurances for Maharashtra's Vidharbha farmers, for MSP, as per the MS Swaminathan Commission recommendation, which is clearly the formula underlined there, which is what Manmohan Singh gave us in 2009. However, when UPA 2 could not deliver on this promise, Modi took advantage and came to power in 2014. The moment he came to power, he reneged on that promise, and in a Supreme affidavit before the Supreme Court, he said, there's no way I can give these prices or my government can give these prices as per the MS Swaminathan Commission report, because it would militate against the market. All this Vijay Jawandhia ji tracks, and do remember the headline of the Hindu newspaper on Sunday, where we find that impoverished soybean farmers in Madhya Pradesh are protesting and demanding 6,000 rupees for soya beans in the state ruled by the Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan. Why that soya bean cost will never be given by the union government and what needs to be promised by the Maha Vikas Aghadi in Maharashtra is what Vijay Jawandhia tells us. He tells us, for instance, that the price of the oil cake, DOC, is critical for soya bean costing. He tells us that the stop of import of GM soya beans is critical if Indian non-GM soya beans are to receive a good price in the market. Please listen in to this conversation, which was part of very valuable deliberations and part of Sabrang India series during the Kisan Commission and A Nation for Farmers 2-day conference held in Mumbai on 26th and 27th October 2024.
We go to the polls on November 20th, and this state, Maharashtra, that once resounded with the protests and demands of a vibrant farmers' movement, today sees complete chilly silence on that score. Will the manifestos of the Maha Vikas Aghadi and the Mahayuti promise Maharashtra farmers, Vidharbha farmers, North Maharashtra farmers, Marathwada farmers, Western Maharashtra farmers, and Konkan farmers their due? That is the question Sabrang India asks as we go to the polls 20 November 2024. Please listen in. When you talk about the agricultural crisis, it is the crisis of all India. And according to Constitution of India, agriculture may be a state subject. The solution to the agriculture crisis is not only with the state. Actually, the solution lies with the central. Because, and with this 1991 new economic policies of globalization, privatization, liberalization, world trade, now everything is with the state, central only, not with the state. So, if at all the agriculture crisis of Maharashtra is to be discussed, it is to be discussed on the background of the policies of the central government regarding the agriculture. And in that, after Modi became Prime Minister, instead of solving the problem, problems are becoming more critical. To be very precise, Manmohan Singh started 1991 liberalization. But I think he realized lately that the gap between the rural and urban economy is increasing. Because he is economist also, less politician and less academician. And I think because of many interventions by P. Sainath and people like that, Manmohan Singh realized that the gap between the rural and urban economy is increasing. And so in 2008, UPA won election year. He took 3 major decisions to bridge this gap of urban and rural divide, economic dividing. He realized that there is a need to pump money in rural economy. And so he took 3 major decisions in that year. The first was to implement Manrega throughout the country. And for that he has given 40,000 crore rupees in first budget in 2005 or something like that. Then he took another decision to waive loan of 70,000 crore rupees of all farmers in India. That money was pumped in the rural economy. And thirdly, the major decision he took, which was related to MS Swaminathan Commission of MSP, he increased the MSP of all the crops from 28% to 50% in one stroke in 1 year. For example, cotton, which is related to Maharashtra and Vidharbha suicides, he raised MSP from 2,030 rupees to 3,000 rupees. But unfortunately, he could not continue that in UPA too. And that advantage was taken by Narendra Modi, saying that the policies of the Manmohan Singh is Mar Jawan, Mar Kisan, and when I will come to power, I will give you 50% profit over all the cost. That was his campaign of 14. And he became Prime Minister, and then he immediately gave affidavit to the Supreme Court that this type of prices cannot be given because it will distort market. है ना? और फिर उसके बाद में वो खुद की ही बातों को उलटते गए. हम इसको देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा. वो कैसे करेंगे मालूम नहीं, उसका अभी तक के उसका कोई जवाब नहीं है. फिर उन्होंने किसानों के लिए कहा कि मैं पीएम किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ 6,000 रुपये, वो भी डिस्टॉर्शन था. उन्होंने मुख्यमंत्रियों को, शिवराज सिंह को, रमन सिंह को चिट्ठियां लिखी कि आप जो बोनस देके खरीदी करते हो वो बंद कर दो. मैं इसको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये आज के स्थिति में महाराष्ट्र के लिए भी बहुत जरूरी है. जो मोदी बोनस देने का विरोध कर रहे थे, मैं बाकी की बातों को अब टाल देता हूँ, पर जो मोदी बोनस देने का विरोध कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्रियों को लिख रहे थे, वही मोदी ने इस समय के विधानसभा के चुनाव में, आप देखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के समय मोदी ने ये क्या कहा. छत्तीसगढ़ में कहा कि बघेल आपको 3100 रुपये धान को दाम दे रहा है, मैं 3200 दूंगा. दैट इज 30% अबव MSP ऑफ पैडी.
मध्य प्रदेश राजस्थान में कहा कि मैं आपको 20% बोनस देके 2700 रुपये में गेहूं खरीदी करूंगा। दिया कि नहीं दिया? मैंने उसी समय उनको लिखा कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, मोदी की गारंटी दे रहे हो इन राज्यों में, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, फिर ये जो मोदी की गारंटी है गेहूं को और धान को, ये बाकी के फसलों को क्यों नहीं देते हो? और बाकी के फसलों को 20% 30% अगर दाम बढ़ाकर आप दे दोगे तो आप जो स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हो, उनका जो C2 + 50% है वो भी इम्प्लीमेंट होगा तो स्वर्ग में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। I have written this to him also and to our chief minister and deputy chief minister also. मुझे ऐसा लगता है कि आज के स्थिति में महाराष्ट्र के किसानों को अगर मदद करनी है और खास करके मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों को, then cotton farmer and soybean farmer must get 20% above the MSP, and that guarantee should be given by Narendra Modi, or if not by Narendra Modi, then it should be given by Sharad Pawar and Maha Vikas Aghadi. Then and then only the farmer can survive in Maharashtra. I am saying this because आज देखिए आज क्या हो रहा है। इन्होंने मार खाया लोकसभा में, मोदी ने, उससे थोड़े से होशियार हो गए वो। अब वो सोयाबीन के लिए क्या कह रहे हैं कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी खाने के तेल पर की, और खाने के तेल पर की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए, उसके कारण अब किसान को सोयाबीन के अच्छे दाम मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान नाउ एंड देन प्रेजिंग मोदी कि वो किसानों के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या कर देखो अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के किसानों ने रास्ते पर रोका था और वो रुके भी थे, और उन्होंने फिर से वही झूठी बात कही कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, अब आपको अच्छे दाम मिलने वाले हैं, हम 4,892 रुपये जो MSP है सोयाबीन की उस पर खरीदने वाले हैं, और 25% के जगह अब हम ज़्यादा खरीदेंगे वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ कि इससे किसानों को दाम ज़्यादा मिल रहे हैं, पर वो कितने मिल रहे हैं? 4200, 4300, 4400 रुपये मिल रहे हैं। MSP भी नहीं मिल रही है, और जो मध्य प्रदेश का किसान 6,000 रुपये मांग रहा है वो भी मिल नहीं सकता है। उसका मेन कारण क्या है? सोयाबीन के दाम ये खाने के तेल पर निर्भर नहीं है। सोयाबीन के दाम ये DOC जो उसके एक्सपोर्ट होती है उस पर निर्भर थे, और आज DOC के दाम ही नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने शिवराज सिंह चौहान जी को चिट्ठी लिखा है, उसमें साफ लिखा है कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं आप। सोयाबीन को 6,000 रुपये जो मध्य प्रदेश का किसान दाम मांग रहा है वो तब तक के नहीं मिल सकते जब तक के 5,000 रुपये क्विंटल DOC का दाम नहीं होता है। डी ऑयल केक जो सोयाबीन में का तेल निकालने के बाद में बचता है, जिसको हम ढेप बोलते हैं या खली बोलते हैं, जो एनिमल हस्बेंडरी में इस्तेमाल होती है, पोल्ट्री में इस्तेमाल होती है, और वो इसलिए नहीं मिल सकते हैं अब क्योंकि दुनिया के बाजार में DOC को दाम ही नहीं है। हमारे देश में DOC को दाम मिलते थे, उसका कारण था कि हम GM DOC के ढेप इंपोर्ट नहीं करने देते थे। मैं आपको बड़े इससे कहता हूँ कि यवतमाल जिले के एक मार्केट कमेटी में व्यापारी और किसानों में मारामारी हो गई। दैट उसने मुझे एनकरेज किया कि मैं शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखूं। वो ये अभी की बात है, 15 दिन पहले की। क्यों झगड़ा हुआ मालूम है? वो किसान व्यापारी को क्या बोलता है, 150 रुपये लीटर खाने का तेल हो गया, क्योंकि ये बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं ना, मोदी से लेके शिवराज सिंह चौहान से सब लोग, कि हमने खाने के तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, अब तेल के दाम बढ़ गए, उसके दाम मिलेंगे आपको। वो बोलता है 150 रुपये लीटर तेल हो गया, आप सोयाबीन को दाम नहीं दे रहे हो। कुछ साल पहले 100 रुपये लीटर तेल था, तब हमको सोयाबीन को दाम मिला। वो व्यापारी को मार रहा है वो। अब वो किसान को ये मालूम नहीं है कि जब उसको दाम मिले 100 रुपये लीटर सोयाबीन के तेल के दाम थे, तब उस समय DOC को दाम थे, आज DOC कोई दाम नहीं है। अब वो बेचारे किसान को क्या मालूम है कि दुनिया के बाजार में $16 प्रति बुशेल का सोयाबीन $10 प्रति बुशेल हो गया है। उसको ये क्या मालूम है कि $450-500 प्रति टन 10 क्विंटल का जो ढेप का DOC का दाम था वो आज $320, $330, $340 भी नहीं है। ये मालूम नहीं है उसको। अच्छा, उसको ये भी नहीं मालूम है कि पहले हम GM की सोयाबीन के ढेप इंपोर्ट नहीं करने देते थे, करके यहाँ दाम बढ़े तो भी दाम बढ़े रहते थे, क्योंकि वो दुनिया में कहीं पे भी नॉन GM है नहीं। आज हमने GM सोयाबीन के ढेप को इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। ये मूल कारण। हाँ, ये मूल कारण है। अब क्या होगा कि यहाँ दाम अगर बढ़ेंगे तो वो सोयाबीन GM की ढेप इंपोर्ट हो जाएगी, सस्ती है आज दुनिया के बाजार में, 27-28 रुपये किलो ही है।
तो इसके कारण यहाँ दाम मिल नहीं सकते। अब अगर किसानों को सही में 6,000 रुपये क्विंटल, जो हमारे यहाँ के गिरीश महाजन, देवेंद्र फडणवीस यात्रा लेके निकले थे नागपुर विधानसभा पे, 6,000 रुपये सोयाबीन को दाम मिलना चाहिए, अगर वो देना है और मध्य प्रदेश के किसान की मांग है, शिवराज सिंह को, चौहान को देना है, मोदी को देना है, तो फिर जैसा 20% 30% बोनस देकर धान और गेहूं की मोदी की गारंटी थी, वैसे फिर 20% कम से कम सोयाबीन को बोनस देकर और 20% कम से कम कपास को बोनस देकर मोदी की गारंटी या शरद पवार की गारंटी महाराष्ट्र के किसानों को क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है। अच्छा, मैं कपास के बारे में इसलिए बोलता हूं कि मैंने मोदी जी को भी चिट्ठी लिखा हूं। देखिए, 2 साल पहले किसानों को 10,000 रुपये क्विंटल दाम मिले महाराष्ट्र में, देश में। क्यों मिले? मोदी जी प्रधानमंत्री थे ना, और आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री है, बाजार भी वही है, मार्केट कमेटी भी वही है, व्यापारी भी वही है। फिर आज वो 7-7,500 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो इसलिए दाम मिले थे कि अमेरिका के बाजार में $1.70 1 पाउंड रुई का दाम हुआ था। आज वो सिर्फ 82 सेंट 1 पाउंड रुई का दाम है। तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखा कि 2 साल पहले दाम मिले हमको, उसका कारण ये था कि अमेरिका में तेजी थी। आज दाम नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण है कि अमेरिका में मंदी है। तो अमेरिका में तेजी तो दाम मिलेंगे, अमेरिका में मंदी तो दाम नहीं मिलेंगे। तो अमेरिका हमारे देश के अगर कृषि उपज के दाम तय करेगा, इफ अमेरिका इज गोइंग टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, देन व्हाट इज द नीड ऑफ यू टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपके सरकार की जरूरत ही क्या है हमारी? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मूर्ख बना रहे हैं, अधूरी बातें बता रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा विकसित देश नहीं है कि जहां का किसान सरकार के तिजोरी की मदद के बिगैर खेती कर रहा है। हमारा ही एक देश ऐसा है कि यहाँ पे हम सब टेक्नोलॉजी के नाम पर, विकास के नाम पर सब पूरा बोझा वो गरीब किसान के आंख पर डाल देते हैं, उसके नए टेक्नोलॉजी के लिए, नए प्रयोग के लिए ले जाते हैं, उसके खर्चे बढ़ते हैं। हम इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी करते हैं, पे कमीशन में सबके वेतन बढ़ाते हैं, हर 10 साल में 3 गुना वेतन बढ़ाते हैं। मोदी जी ने भी वही किया है, पर किसान को हम कुछ भी नहीं देते। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में वेतन आयोग का मैं विरोध नहीं करना चाहता, पर वेतन आयोग में अगर वेतन ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है और खेत की मजदूरी और खेत के फसल के दाम अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसा होगा, ये मेरा सवाल है।